Ladies and gentlemen, you are still not ready for this. अ मूवी लाइक धुरंधर, कितनी मेहनत लगती है एक सेट को बनाने में। A lot of creativity, a lot of planning goes behind it. उसमें हर एक एरिया और एक स्पेस में डिटेलिंग देखना पड़ता, कलर कोऑर्डिनेशन, लाइटिंग, proportions. This project was selected for Dhurinder. This project itself is so well designed, from the entrance to the driveway to the entrance foyer and to the different parts of the house. Everything is designed so well. It took us nearly 4 years. 4 years to Yes. complete this project. Yes. My favorite area is like open sit out area, Yes. round yes. shaped. Yes. वो मुझे पर्सनली सो दैट इज द लिविंग एरिया, जैसे आप कह रहे हो कि आपने मूवी में देखा है. इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द हाउस. a movie who's starring Ranveer Singh, like a man full of energy. Of course, very professional, very dynamic. His presence just brings a different vibe on the set. People are asking, even from other countries we are getting calls, that where is this house located. Gayatri Bedi, the Dhurandhar lady of the interior designers in India. इंटीरियर डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री की बात करें, कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं? A lot of veneer, metal, wallpapers, all these materials people are using. एक माँ जो होती है वो एक योद्धा होती है. शी नीड्स टू प्ले अ लॉट ऑफ रोल्स इन हर लाइफ. Yes, that is true. We are playing a lot of roles. I'm a mother, I'm a wife, I'm a daughter, sister, daughter-in-law, and all roles are important. अगर आपके पास में अनलिमिटेड बजट हो तो आपका ऐसा कौन सा ड्रीम सेट होगा जो आप प्रिपेयर करना चाहोगे? व्हाट आर द एक्चुअल ट्रेंड्स दैट आर देयर इनटू द मार्केट आफ्टर द ग्रैंड सक्सेस ऑफ धुरंधर, जहाँ पे आपने एक अमेजिंग वर्क शो करा है अपना? इज देयर एनी मोर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जहाँ पे हम आपका काम और देखने वाले ऑन स्क्रीन? आप सभी ने धुरंधर तो ज़रूर देखी होगी, और अगर आपने नोटिस किया हो, फिल्म के कुछ ऐसे ग्रैंड और विजुअल स्ट्राइकिंग मोमेंट्स में एक रॉयल लग्जरी मेंशन को बार बार नज़र आता है. वही स्पेस जो कहानी को स्पेस और स्केल एलिगेंस भी देता है. और आज उस खूबसूरत मैंशन के पीछे वन ऑफ द क्रिएटिव माइंड्स हमारे साथ मौजूद हैं. साथ ही इनकी जर्नी भी उतनी ही इंस्पायरिंग है. कोर्ट रूम्स के ब्लैक एंड वाइट दुनिया से लेके डिज़ाइन और क्रिएटिविटी के कलरफुल वर्ल्ड तक, एक वक्त था जब ये हाई कोर्ट के लॉयर के रूप में केसेस लड़ती थी, और आज ये इंडिया के टॉप नॉच फर्नीचर इंटीरियर डिज़ाइनर में है. प्लीज़ वेलकम द वेरी टैलेंटेड एंड एलिगेंट गायत्री बेदी. वी आर प्लीज्ड एंड ऑनर टू वेलकम यू मैम ऑन आवर शो. Thank you so much. Thank you for having me over. सो लाइक एक मूवी सेट को जब डिज़ाइन या इंटीरियर डिज़ाइनिंग की लैंग्वेज में हम बात करें, अ मूवी लाइक धुरंधर, सो कितनी मेहनत लगती है एक सेट को बनाने में? A lot of creativity, a lot of planning goes behind it. In the sense, उसमें हर एक एरिया और एक स्पेस में डिटेलिंग देखना पड़ता है. लाइक जैसे आप कह रहे हो, एक सेट को भी अगर हमने प्लान करना है, विच इज़ टेम्पररी, राइट? इट्स नॉट देयर फॉर एवर, इट्स फॉर फ्यू डेज और फॉर फ्यू मंथ्स. कलर कोऑर्डिनेशन, लाइटिंग, proportions, and for what purpose that area is being used. So I would say, उसमें बहुत मेहनत लगता है, takes time, takes and full teamwork उसमें इन्वॉल्व है. एक नॉर्मल घर को बनाने में और एक बहुत एक मूवी जैसा सेट लाइक मूवी लाइक धुरंधर को बनाने में, लाइक व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस कि जहाँ पे घर में आपको शायद इतना टाइम देना पड़ेगा, या सेट पे कितना आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, किस तरीके के डिफरेंट एफर्ट्स होते हैं वो? See, when you're making a home for, like when you're making a home, आपका विजन है that you're making it for real people, right? जिनका एवरी डे वहाँ पे उठना बैठना है. आपको कितनी चीज़ें, कितने एस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं, फंक्शनैलिटी, मेंटेनेंस, प्रैक्टिकल.
So you have to keep all these things in mind. In fact, that's what I tell all my clients कि जब हम घर आपके लिए बना रहे हैं, more than the vision, we have to design for reality. You know, keeping all these points in mind, and also कि execution कैसे करनी है site पे. Designing, you know, it's very easy for us to design something which looks very spectacular, you know, but that same thing can be very difficult to execute on the site. And even if we execute it, उसके बाद उसकी maintenance is also a problem. So that's what my tip to all the clients whenever I meet any new client is that, okay, I understand you are looking for trendy homes, you're looking for something wow in your home, but please make a home which is functional. लाइक सबसे पहली चीज़ जब आपको ये प्रोजेक्ट ऑफर हुआ होगा तो सेट को लेके या जो पर्टिकुलर सीन्स थे जिसमें इस तरीके से चीज़ें डिज़ाइन होनी थी तो उसको लेके सबसे पहला एक माइंड में थॉट क्या आता था आपको? So, to be honest, जैसे for example, this project was selected for Dhurinder. This project itself is so well designed. आप चाहे गेट से भी जब आप एंटर करते हैं, फ्रॉम द एंट्रेंस टू द ड्राइववे टू द एंट्रेंस फॉयर एंड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हाउस, everything is designed so well, keeping you know, what is needed or what is required in every space or corner. So I think even when these people, when the team got in touch, they you know, सब search करते हैं अपना जो site एक बारी, when they hire, you know, for the shoot, they didn't need to make any changes as such because everything was so perfect, it was in place. जब कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपके पास आता है लाइक मूवी प्रोजेक्ट नेम धुरंधर का, तो पहला ये जो अपॉर्चुनिटी है ये लाइक कैसे मिली आपको? I got this project. It's a very interesting story. It was over a dinner conversation. डिनर कॉन्वर्सेशन? Yes, dinner conversation. So the clients have known me for many years. They are family friends. And that time I had just started doing this work. And you know how it is जब आप किसी को मिलते हो, you know, over dinner or lunch or anything. So casually उन्होंने बात करी किसी ने, you know, कि Gayatri is doing furniture, you know. So, you know, it's like रात गई बात गई, you know, कितनी conversations होती हैं, सुबह उठ के लोग भूल जाते हैं. But I would say thanks to this client, she gave me this opportunity, she gave me this push. It's because of her that I feel confident today that I can do anything. You know, she involved me, she started involving me at every step of the project. Even जब कुछ भी नहीं था उधर लैंड पे, it was just bare, you know, तब काम शुरू ही होने वाला था. That's the time she involved me with all the plans, the decision makings, the designing, and she herself is an architect, you know. Okay. So उनका भी similar profession है. So her vision was very clear, her concepts were clear. You know, it's like sometimes आपको अपनी life में या professional life में ऐसे कोई मिल जाता है that from whom you get to learn a lot. So she is that one person for me who taught me and who gave me that push, and she would be like, Gayatri, I know तुम कर सकती हो. I would have that question mark in my mind कि इतने products, 200, 300 products, how will I manage? And each product was different from the other. You know, each product had its own, it was a art piece. You know, जो उनके घर में जो भी हमने फर्नीचर किया है, मिरर्स करे हैं, पेंटिंग्स किए हैं, दे आर जस्ट नॉट कि कुछ भी लगा दो टू फिल द स्पेस. एक आइडेंटिटी क्रिएट करी है उधर हर एरिया में. So yes, I'm so thankful to her that or thankful to that dinner which we had, that baat hui casually, but you know, then I was involved, very much involved. It took us nearly 4 years or maybe over 4 years to complete this project. 4 years Yes, to complete this project? yes. Wow. Because it's just a huge project. Personally, when I saw the movie, so my favorite area is like the open area that उसमें दिखाया हुआ है मूवी के अंदर में, एक ओपन सेट आउट एरिया Yes, राउंड yes. शेप्ड.
Yes. वो मुझे पर्सनली So बहुत that अच्छा is the living area, ओके you know, जो as you enter, so that is again it gives visually बहुत strong है वो area. So जो भी कोई देखता है उनके mind में वो एक concept बैठ जाता है, जैसे आप कह रहे हो कि आपने movie में देखा है. So many people, it's a very attractive part of the house. जब सेट्स पे आपका कभी जाना होता था लाइक फॉर वर्क रिलेटेड वर्किंग, Yes, absolutely, आना जाना अभी भी रहता है हमारा. तो लाइक जब आप एक ऐसे मूवी कास्ट के साथ काम कर रहे हो एंड स्पेशली व्हेन अ मूवी हु स्टारिंग रणवीर सिंह, लाइक अ मैन फुल ऑफ एनर्जी, सो कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ में काम करने का? So I'll be honest, I didn't get a chance to meet him, but I would see him, you know, while they were shootings. Of course, very professional, very dynamic. You know, his presence just brings a different vibe on the set. I think जो आप energy उनकी on screen देखते हो, there is no difference that you see off screen also. So I think there are no words for him. He's really good. सो लाइक चंडीगढ़ में अभी बहुत बंगलोज बन रहे हैं, लाइक चंडीगढ़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्लान सिटीज़ इन इंडिया इफ़ यू टॉक अबाउट द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया. तो वहाँ पे अभी और किस टाइप के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स और आ रहे हैं? You know, Chandigarh, yes, you're right. There are a lot of people are really investing in their homes. You know, people are house proud वहाँ पे. लोगों को बहुत शौक है, बहुत मेहनत करते हैं डिटेलिंग में जाने को, you know, अपने डिज़ाइंस फाइनलाइज करने को. In the sense, there was a time that I remember as a kid, we would see कि only the ladies are involved in making the house. But I see that now the men are equally involved or even more. The whole family is involved. बच्चे involved हो जाते हैं, सबके अपने अपने ideas होते हैं. So there are beautiful projects which are coming. I would say Chandigarh is a great market for interiors, for architecture, because people want to invest in having a good home. You know, like even this client of mine, 4 years is a long time. और 4 years भी हमें लगता है कि जल्दी हो गया है. It could have taken maybe more than, you know, 4 to 5 years to complete this. अभी what are the actual trends that are there into the market when it comes to interior designing architects or the entire real estate industry that is going on? So Chandigarh, I would say neoclassical is what people like Okay. more, because the only reason is because of the space. And with neoclassical, I would say it's not that typical classic furniture or designs or interiors that people are doing. They are happy to blend both the concepts, which is modern and classic. You know, so it's a balance between the both. You know, no one wants too much of heavy products around them. There were times के पहले हम एक वॉल पूरी भर देते थे with photographs or artifacts or hanging different you know, art on the wall. People want minimum things, and how they want to enhance their area or their house is by you know, products like furniture or beautiful mirrors जो उनका एक उनको स्पेस में एक you know, enhancement ला देता है. लाइक मिरर्स की आपने बात करी, सो अभी करंटली द ट्रेंड इनटू द इंटीरियर डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री, सो मिरर्स पे बहुत काम हो रहा है. लाइक लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो हम लोग देखते हैं, तो वहाँ पे मिरर्स को लेके जैसे वॉल हो गया, सीलिंग इनफैक्ट बहुत कुछ है. एब्सोल्युटली आपकी बात सही है. सीलिंग में बहुत हो रहा है मिरर्स का काम. फर्नीचर पे हो रहा है, कंसोल्स पे हो रहा है, कैबिनेट्स पे हो रहा है. हालांकि मैंने तो एक मेरे क्लाइंट है अगेन फ्रॉम चंडीगढ़, आई हैव डन मिरर साइड टेबल्स फॉर देम, समथिंग जिसका यूज़ एवरीडे होता है. सो फुल मिरर साइड टेबल्स किया है. यू नो, बड़े बड़े कैबिनेट्स बनाए जा रहे हैं मिरर्स के, विच आर लाइक अबाउट 8 to 9 feet. So because there is a lot of variety, you know, there is so much of material which has come in the market. Mirror is not what we see, the, you know, the usual mirror. When you say mirror, there is like आपको कितनी ऑप्शंस मिल जाती हैं, राइट? आपको चाहे डोर्स भी बनाने हैं जो मिरर में, ग्लास में, उसकी ऑप्शंस मिल जाती हैं, राइट? नाउ देयर इज़ fabric glass which has come. Mirrors में there are different shades which have come. People want to mix and match.
So there's a lot of variety and clients are happy to experiment with that. लाइक अभी आपके हिसाब से वुडन फर्नीचर पीसेस की जब हम बात करते हैं, सो लाइक आई हैव सीन लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स दैट इज करंटली गोइंग इनटू द मार्केट की जहाँ पे वो बहुत डिफरेंटली डिज़ाइंड वुडन पीसेस एंड आर्टिफैक्ट्स के साथ में दे आर पुटिंग अप इन द बेडरूम्स, ड्राइंग रूम्स, एंड दे आर नॉट जर्नल डिज़ाइंड पीसेस. बेसिकली लाइक जैसे वुड को भी उन्होंने मोल्ड कर दिया एंड So बहुत these सारी चीज़ें. are wooden artifact products. Okay. You know, I would label it that. You know, एक तो जो हमारा होता है normal wood furniture जो you know इतने सालों से चल रहा है, which is evergreen, I would say. It will never go out of fashion. But जिस products की आप बात कर रहे हो, that is actually made out of one wood. You know, it's given a different Curves. a different style, and then there are many ways to make it look better. You know, बहुत artistic ways हैं. You can do inlay work, brass का काम कर सकते हो, marble का काम कर सकते हो, hand paint कर सकते हो. So that's what people are going in for also. इंटीरियर डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री की बात करें, सो व्हाट मटेरियल ट्रेंड्स आर करंटली गोइंग इनटू द मार्केट, लाइक कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं? You know, a lot of veneer, वेनियर. metal, too much of variety has come. You know, wallpapers. Again, wallpapers also, those days have gone when wallpapers were actually wallpapers. But now it's coming, wallpapers itself is coming in different materials. You know, it comes in leather, it comes in raw silk, it comes in, you know, with pearls on it, sequins on it. So all these materials, again, people are using. They're happy to use. In fact, my first question to one of my client was, we had selected a beautiful wallpaper with pearls on it. So मैंने vendor से पूछा, मैंने कहा, how do you maintain this? You know, this is a wallpaper. You can't remove it after just a year or so. At least 6-7 साल तो चले. So her answer was like, nothing, just a normal cloth. Wipe it with a normal cloth and nothing will happen. And I said, what if the pearls come out? You know, again, it's natural. You know, हाथ का काम है, निकल सकता है. It happens, you know, labor work के साथ. She says nothing. In fact, I tried my best, you know, To with remove it. to remove it with my nails, and it was quite strong. So, you know, people are coming up with these different concepts, different materials. Now, when you go for these exhibitions जो भी होती हैं, in fact, we designers, all of us visit these exhibitions. Every time you go to an exhibition, you see something new. And you feel कि अभी तो 6 महीने पहले गए थे, ये आया था, अब ये आ गया है. अब आप केन की बात ले लो. केन कितने सालों से चल रहा है ना? पुराने पता नहीं कितने हमारे दादी तब से चल रहा है. परदादी के ज़माने से केन का फर्नीचर चल रहा है. अब आप अगर जाओगे, देखोगे मार्केट में या एग्जिबिशंस में, केन की लाइट्स बन रही हैं, राइट? उसके आर्टिफैक्ट्स बन रहे हैं, ब्यूटिफुल शैंडलर्स बन रहे हैं. So that's what I'm saying. People are being very, very innovative, very creative, and coming up with these ideas. And that's what, of course, we designers and clients, all of us are, you know, we are using this in some area, some corner of the house. कहीं ना कहीं use हो जाता है. Outdoor furniture में, like कोई outdoor area है, balcony है. You don't mind putting cane lighting because you know उसका maintenance easy है. It's not going to get spoiled. It's not going to get dirty. You know, it's not going to get damaged. अभी लाइक जैसे आप बता रहे थे, लाइक एग्जीबिशंस में जाते हैं लाइक एवरीबडी, एंड यू जस्ट गो थ्रू एंड कम अक्रॉस लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ऑल. तो कितना इम्पॉर्टेंट है एज अ डिज़ाइनर टू बी अपडेटेड इनटू द मार्केट, बिकॉज आज की डेट में जितना आप अपडेटेड हो, शायद उतना ही इक्वली अपडेटेड क्लाइंट्स भी होने लग गए हैं. Absolutely. So उसको आपकी कैसे बात manage करते हो? बिल्कुल सही है. Because I have so many clients जो मुझसे पहले जाके एग्जीबिशन देख लेते हैं. I told you, they're बहुत एक्टिव clients हैं आजकल, right? Thanks to Pinterest, thanks to Instagram. Good in a way, but again, not good in a way. Because sometimes I get messages on my project groups filled with Instagram reels, you know, and I always tell them, okay, these are the concepts you've liked. You know, आपको कोई चीज़ एक वीडियो में या फोटोग्राफ में बहुत अच्छी लगती है, बट यू हैव टू सी इफ दैट इज़ गोइंग टू बी लुकिंग ग्रेट इन योर एरिया और नॉट.
you know, that is again, though that reel they have put after a lot of hard work behind it, right? There is Photoshop, there is editing, there is artifacts which are put just for that picture or for that reel. हमें पता है ना, right? हम भी shoots करते हैं, कितना कुछ you know behind the scenes चलता है. So we have to tell the client will say, अच्छा उसमें तो ऐसा shade आ रहा था, ऐसा curve आ रहा था. अब उनको कैसे आप समझाओ? Sometimes you literally have to explain it to them that it can be the reflection. There are so many things which come. So you're right, it's very important to be updated. We have to be, there is no choice if we have to stay put in this profession, you know. So तभी तो मैं आपको बोल रही हूँ कि हर एग्जीबिशन में कुछ नया देखने को मिलता है. और कितना इम्पॉर्टेंट है मैम रियल होना, बिकॉज जैसे अभी आपने पिंटरेस्ट की बात करी, सेम चीज़ हम लोग भी लाइक व्हेन वी कम अक्रॉस लाइक प्रोफेशनल्स लाइक यू, तो हम लोग जब डिस्कशन करते हैं तो उसमें कॉमन टॉपिक निकल के आता है कि जितने क्लाइंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा रील्स भेजते हैं, हमको ऐसा चाहिए. बट बोले हमारा और हमारी टीम का एक टेक होता है लाइक कि जैसा अभी आपने एक्सप्लेन करा कि लाइक वहाँ पे वो जो दिख रहा है और जो एक्चुअल बनेगा आपका जो स्पेस है, दैट विल बी इट विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दैट. तो इसको कैसे आप समझाते हो टू द क्लाइंट कि जिससे वो उस चीज़ को मान सकें कि हाँ ये चीज़ होती है? सो दैट्स व्हाट समझाना पड़ता है, बिकॉज सी आई कांट ब्लाइंडली डू थिंग्स व्हाट द क्लाइंट इज सेइंग. अदरवाइज why have they taken me on board? There is a reason that why they've taken me and my team on board for guidance and for suggestions and to you know design their area. So उनको बताना पड़ता है कि there are so many things. Now if your ceiling is in a rectangular shape, a certain design is looking amazing in that shape. But if I do the same concept in my house and that the ceiling is square, it will look different. उसमें भी फिर क्लाइंट ऑब्जेक्ट करेंगे कि दैट वो लुक नहीं आ रही मैडम, वो फील नहीं आ रही. सो बिफोर वी फाइनलाइज एनीथिंग or you know we start doing anything on our site, we start executing, I make it very clear to the client that this is not going to go well in your house, so please let's not do this. And I feel हमें अपने real designs create करने चाहिए, because there is so much, the creativity field is amazing and sky is the limit. सो लाइक अगर किसी एक्टर ने लाइक एक आपको डिज़ाइन स्पेसिफिक घर या सेट बनाने के लिए बोला, तो लाइक व्हाट वुड बी योर टेक ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट? See, if an actor tells me to make a set, firstly, I need to know what the background is, what is their requirement, you know, because I'm sure every movie, every scene requires some, you know, some that, you know, particular kind of atmosphere in that scene. So, you know, as I said, designing में sky is the limit. We can design anything, but we need to know कुछ एक बैकग्राउंड पता होना बहुत ज़रूरी है कि अगर बेडरूम का सीन है, लिविंग एरिया का सीन है, कोई एक्शन सीन है, कोई यू नो व्हाट काइंड ऑफ सीन इज़ इट. सो अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन दैट, ऑन दोज रिक्वायरमेंट्स, we can create anything. Like in a movie Dhurandhar, there were a lot of sets that were made जो actually के अंदर में रियल नहीं थे, बट वो रियल लग रहे थे. तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? So जो scenes हमारी साइट पे जो शूट हुए थे, I would say वो सब रियल थे. You know, The villa scene. Yes, the villa scene, the driveway scene and the entrance foyer area scene, everything was real. So the team or the crew didn't have to make any changes, because I think when they got in touch with my client, that is what they were looking for, and that's how they quickly finalized कि yes, this is the kind of a bungalow we are looking for, and that's how they finalized it. Skills versus connections, इंडस्ट्री में क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? Both, but I would say first comes skills. Skills. Yeah, you have to be skilled. You need to have a strong team behind you, because it's the team that you know, the team and of course you yourself will grow together. अगर आपके पास में अनलिमिटेड बजट हो, तो आपका ऐसा कौन सा ड्रीम सेट होगा जो आप प्रिपेयर करना चाहोगे? Unlimited budget, Yes. wow. That's amazing. Oh yes, I think I would
अगर मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिले और मेरा अनलिमिटेड बजट हो, आई वुड फर्स्टली एज आई सेड मेक अ होम विच इज गिव्स अ फीलिंग ऑफ अ होम एंड नॉट ऑफ अ देर आर बहुत होम्स होते हैं जो एक होटल टाइप फीलिंग आ जाती है, राइट? दैट इज़ नॉट वॉट आई वुड वॉन्ट टू क्रिएट, इवन वेदर द बजट इज़ लिमिटेड और अनलिमिटेड, right? Space is how to use every space is very, very important. We have to be real, as I mentioned. We are living in a country like India. Whichever city we are living in has different seasons, right? For example, आप चंडीगढ़ को ही ले लो, because we are emphasizing a lot on that city. चंडीगढ़ itself has so many seasons, right? कितने तरह का मौसम आता है, गर्मी हो गई, ह्यूमिड हो गई, मानसून आ गया, प्री विंटर आ गया, पीक विंटर आ गया. सो यू हैव टू केटर टू योर होम्स अकॉर्डिंग टू दिस ऑल्सो, राइट? आपका स्टाफ है, इतने बड़े बड़े घर बन रहे हैं, तो उनको घर को मेंटेन करने के लिए एवरी हाउस देयर हैज़ इन हाउस स्टाफ, राइट? फॉर एग्जाम्पल एजड पेरेंट्स हैं घर पे, राइट? किसी को कुछ भी इशू हो सकता है, राइट? कोई नर्स रख रहा है, नाइट नर्स रख रहा है, डे नर्स रख रहा है, या किसी के न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं तभी भी लोग नर्स रख रहे हैं. यू हैव टू मेक योर होम प्रैक्टिकल इन अ वे दैट इट केटर्स टू ऑल दीज थिंग्स, राइट? आप नर्स रख रहे हो, अब आपकी नर्स कहाँ, फिर प्रॉब्लम हो जाता है. यू नीड हेल्प एट नाइट, वेयर इज़ द नर्स गोइंग टू स्लीप? सो माई फर्स्ट अगेन वन ऑफ द मेन क्वेश्चंस इज, जब मैं किसी भी क्लाइंट के साथ ऑन बोर्ड जाती हूँ, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द हाउस? Are they kids? Are they old people? Are they pets? Because we have to design, your home accordingly, keeping these things in mind. छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, teenagers की अपनी requirement है, जो smaller kids have their own requirement. Aged people have their own requirement, and these days everyone, especially in the north, wants unlimited space for storage, right? Big walk-in closets. सबको एक यही प्रॉब्लम होती है, राइट? स्टोरेज इज़ एन इशू. जब भी आप कोई एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हो, तो जब स्टोरेज की बात आती है, जैसे अभी आप बता रहे थे, बिकॉज ये कॉमन प्रॉब्लम हर इंडियन हाउस होल्ड में दिख रही है. पार्टीज़ के लिए अलग क्लोथिंग चाहिए आपको, फॉर्मल चाहिए, ट्रेडिशनल चाहिए, एसेसरीज अलग चाहिए. एंड नाउ डेज व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग कपल, तो उनको एक सेपरेट स्पेस भी चाहिए, ठीक है? एंड एक कुछ टाइम पहले वी वर डूइंग अ पॉडकास्ट, तो वहाँ पे द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी सेड कि आजकल एक नई चीज़ हमारे को सामने मिलती है, दैट इज़ सेपरेट वॉशरूम्स. यस, एब्सोल्युटली. बिकॉज दोनों को तैयार होना है, दोनों को सेम टाइम पे ऑफिस जाना है, और Yes, दोनों yes, को yes. पहुँचना है, तो वहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट नहीं चाहिए. It's very, very common. You're absolutely right. मेरे हर client, I would say not 90%, 99%, all clients have this requirement. Separate washrooms, separate huge, I would not say huge, I would use the word humongous walk-in closets. Because जितनी space एक woman को चाहिए, उतनी ही space उनके husband को ही चाहिए. So it is a competition. So it's not that women are shopping more and men are not. They are equally buying a lot of things, because men की भी तो कितनी accessories हैं, watches हैं, belts हैं, cufflinks हो गए, pocket square हो गए, सब कुछ. And everyone wants that it should be displayed well, because सभी इतनी जल्दी जल्दी रेडी होते हैं, so they want कि उनके नज़र में रहे, विजन में रहे. आइलैंड काउंटर्स हम बना रहे हैं जो आप देखते हैं ड्रेसिंग रूम में, इट कैन बी रेक्टेंगुलर, इट कैन बी स्क्वायर, इट कैन बी ओवल, बिकॉज दे वांट, सो specifically they tell me that there should be a glass top there. They want to see their watches, they want to see all these things that I mentioned to you. So it's easily accessible also. ties हो गई, so उतनी ही तो चीज़ें women की होगी. women का क्या, वो bags हो गए, shoes हो गए. So it's at par. And you're right, everyone wants 2 washrooms. और अगर 2 washrooms देने की कभी गुंजाइश नहीं होती, तो क्या होता है कि हम 2 sinks दे देते हैं सेम वॉशरूम में. ओके. Got it? So we make the vanity really big. So जितना emphasis कोई अपने ड्राइंग रूम में दे रहा है, equal emphasis दिए जाते हैं वॉशरूम में भी, because they say that's their personal space. Yeah. Got it? That's also very important.
एज इम्पॉर्टेंट एज अ ड्राइंग रूम और द रिक्रिएशनल रूम. अभी मैं कर रही हूँ ना, अभी किसी का भी मैं मतलब हर प्रोजेक्ट में एक ये रिक्वायरमेंट है. सो इट्स अ डन थिंग. सेपरेट रूम्स ऑल्सो कपल्स आर टेकिंग. Yeah, in this, I was about to ask you. Separate rooms. So but- it's not that there is anything bad or they are not getting along. They're very happily married, happy families and everything. But सबकी requirement एक different हो गई है. Someone wants to watch TV till late. Someone has some issue. Someone has a routine of waking up at 4 in the morning to go for a run. Someone is coming back late from office. There is disturbance. So these are necessities. Because in one of our previous podcasts, other guest, he was telling a story that one of their clients, they just demanded, they had a 6 BHK in one of the prominent locations in Gurgaon, and what they have designed in such a manner कि there is a separate personal bedroom for the male member, the separate personal bedroom for the female member lady, and there are 2 more bedrooms that are meant to be for their day out relaxation. Yes, absolutely. So I was this was my first like experience of getting to know about कि ऐसा कुछ हो रहा है. So फिर मैंने थोड़ी क्यूरियोसिटी के अंदर मैं उनसे और जाना कि लाइक ये एक्चुअली मैं बोला हाँ बहुत ओपनली डिस्कस होता है, दोनों बैठते हैं. आए मेरे पास में दे सेट कि हमको सेपरेट बेडरूम चाहिए और डे के अंदर में जब हमारा वर्किंग होता है तो अगर हमको रिलैक्स करना है तो डे का भी सेपरेट है दोनों का. I totally agree. It's a very, very common things, a common thing that the clients ask for. And they are open about it. आपस में क्या है तो पूरी फैमिली के सामने डिस्कस करते हैं. Even if the kids are around. So it's an important factor. Even because someone wants a recreational area with the TV, someone wants a recreational area without a TV. They want a library, they want to study, they enjoy reading, they don't want to watch TV. वन प्रोजेक्ट जिसमें या जिससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिला. Yes, a lot of project. Actually, every project has some learning. Because when you are doing all these projects, you're dealing with different kind of people. And every person has a different demand and a different requirement and a different style of design. There are no two people who are the same. चाहे मैं चंडीगढ़ में कर रही हूँ, दिल्ली में, बॉम्बे में और other cities also. Pan India we are doing projects. सबका demand अलग होता है. Some people like very calm and pastel colors. Some people like the flashy gold. So I would say every project has taught me a lot. And especially in the beginning, जब मैंने शुरू किया था अपने initial years में, when I started taking full projects, not only projects, even when I started doing furniture designing, I learnt a lot. So I would say ये जो learning process है ये कभी नहीं रुकता है. In fact, I'm very happy to learn from my teammates. ये जो young लोग होते हैं इनमें इतनी creativity होती है. They come up with different things which maybe I won't think of and they will think of. So the learning should not stop. If that stops, your growth stops. Yeah. So like there are a lot of young people, professionals who will be like watching this episode of ours. तो उनके लिए आपका एक क्या सजेशन होगा? They are when it comes to interior designing, architects, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से. I would tell all the young people out there that, of course, this profession, not only this profession, every profession demands a lot of hard work and consistency. And every profession does take some time to reach at a certain level. मैं अपना ही एक example देती हूँ that I started this work out of nowhere. Literally, I don't come from a background of architects or interior designers. One fine day, I thought कि चलो, let's start something different, because I could not get back to my previous profession. So I said, चलो furniture designing शुरू कर लेते हैं. Let's see how it goes. Because मेरे को हमेशा काम करने का शौक था. And also, parents ने हमेशा एक push दिया कि कुछ करो. Do something with your life. You just don't have to be doing nothing or just be a housewife. Parents ने push दिया, husband का support था, पूरी family का support था. So I would say that it's a lot of hard work, consistency, not to give up, and you got to believe in yourself. There are a lot of challenges which come in this profession.
You do get disappointed, you do get frustrated, because बहुत frustrating हो जाता है to deal with all kind of people in this work. Now I'm dealing with laborers also, I'm dealing with clients also, I'm dealing with different designers also. So the coordination and the timelines, it can really tear you apart. But as I would say, lage raho. And it's just, you got to tell yourself by the end of the day and the moment you start your day that you can do it. So this is something, nothing is impossible. मेरे को लगता है कि if I can do it, anyone else can do it. That is And so you sweet. learn. There are challenges, आप सीखते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करना है. You also learn to be calm, कि अब हो गया, ये एक ब्लंडर हो गया. Now forget it, वो तो हो गया ना. How to solve it? Let's do that. And I think most important thing is client dealing. You got to be very good with that. जो हम कहते हैं ना, एक मीठी ज़ुबान वो होनी बहुत ज़रूरी है इस प्रोफेशन में. हो तो मैंने सीख लिया है. Things go wrong, things get delayed. I totally agree with that. But how to manage your client is what is important. So for me, I always tell my teammates, it's not about just getting a project and getting your fees for that project. It is about how to have a long-term relationship with your client. That's very important. And that is my main aim, that जो भी मेरा client हो, I should have a good relationship with them all my life. A woman is a true warrior, as I believe, and she needs to play a lot of roles in her life. So, इस पे आपको क्या कहना है? Yes, that is true. We are playing a lot of roles. I'm a mother, I'm a wife, I'm a daughter, sister, daughter-in-law, and all roles are important. You can't say कि अभी ये नहीं करना, वो नहीं करना. Your work is important. You've promised so many clients. You have commitments. You have deadlines. You have to finish that also. As a mother, I think kids, again, are so important. जो mother की vibe और feeling होती है, it's very different Very from different. a father. No matter how tired I am or how busy I am, I make sure that I keep a check on my children, even if I'm traveling. It's like a daily routine. I like to personally plan their day, especially when it's a holiday. I need to know कि वो क्या खा रहे हैं, क्या मतलब all these things are very important, because as I said, आप कोई भी रोल इग्नोर नहीं कर सकते. वाइफ का रोल तो बिल्कुल भी नहीं इग्नोर कर सकते, राइट? सो एवरीथिंग it's a balance. You have to, we women, I think, are blessed with this. Sometimes I also ask myself this question कि ये कैसे कर लेती हूँ मैं, small things, follow-ups करना, whether it's sending messages or voice notes or emails for kids classes or for the work, or it could be किसी family member का काम है. But it happens very naturally. मेरे को अब वो नहीं लगता है, burden नहीं लगता है. Of course, as a human being, you do get tired. Then ठीक है, each day is a new day. Because ये अभी जैसे आपने जो बात बोली ना, तो I just remember there is a movie called KGF. तो उसका एक डायलॉग है कि जहाँ पे जो यश द एक्टर ही सेज कि एक माँ जो होती है वो एक योद्धा होती है. So like because a mother needs to play a lot of different kind of roles that you just mentioned. Yes. और उसको हर एक इंडिविजुअल रोल जो भी वो कर रही हैं तो उसमें उनको बखूबी अपना जो कैरेक्टर है उसको निभाना है. Whether it's with children, whether it is with husband, whether it is with father, mother, any kind of Everything, professional. your Yeah. normal household, because again, a woman can only manage her house, Men don't have it in them. Sorry, they just don't. मतलब अगर मैं 2 दिन बोल दूँ अपने हस्बैंड को घर संभालने में, I don't know क्या होगा outcome. It'll be like, I'll be traumatized. लाइक आजकल सबको मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन चाहिए होता है, बट आप जो है वो बात करते हो रिगार्डिंग विंटेज कॉलोनियल डिज़ाइंस एंड ऑल. सो लाइक हाउ डू यू मैनेज लाइक व्हेन इट कम्स टू डिज़ाइनिंग पार्ट? So it has to be a balance between the both. We need to blend it quite well. I would, for example, जैसे हम एक room कर रहे हैं, it could be any a formal room or an informal room.
So, for example, if we are taking heavy walls, we are doing a lot of molding there, then we need to tone it down with simpler furniture. So heavy walls, heavy furniture, carpet, bade bade show pieces, no, that is not what looks good. With that, when you enter a room, जब आप किसी रूम में एंटर करो, आपको एक एलिमेंट ऐसा दिखना चाहिए which gives you a wow feeling, that oh wow, this is such a beautiful piece, or the wall is done so nicely, or the ceiling is done so nicely. So you can play with so many materials and elements. So that's why I said it has to blend in and it has to be a balance. If we are taking furniture which is little heavy, then we keep our walls and our ceilings little subtle, little more, like nothing too loud. So like your journey, when I talk about, so like from custom designs to Gayatri Bedi designs, so ये जो एक शिफ्ट था, सो ये सिर्फ नेम का शिफ्ट था या पूरी कंप्लीट आइडियोलॉजी ही चेंज हो गई आपकी आफ्टर दैट रीब्रांडिंग? नहीं, आइडियोलॉजी भी चेंज हुई, व्हेन इट केम टू पर्पस, व्हेन इट came to functionality, sustainability, aesthetics. All these things did change with time, because as I said, it was a learning process. I did not come from a background of this profession. Our name change इसलिए किया मैंने, because I wanted my clients and people who are viewing me on any social media platform, Instagram, they should connect with Gayatri Bedi directly. Custom interiors was somehow not, I could only not relate to well. So rebranding, I thought the simple thing would be keep Gayatri Bedi, so the connection is there. People knew more about me, as Gayatri. No one was getting to know custom interiors. So I felt to build a brand, best is I changed the name, and for me changing the name was simple. Just keep my name. Just make it more personalized. Absolutely, just personalized, nothing complicated. So even if someone is looking at my page or they're saying anything, they know, they know me and they know my brand. आप हमेशा मटेरियल लेड डिज़ाइंस की बात करते हो, तो जहाँ पे अगर लाइक एक आदमी को समझाना हो तो उसमें लाइक ट्रेंडिंग डेकोर को कैसे आप समझा पाओगे? See, what happens is, जो materials है ना, वो आपका एक आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं. Okay. Right? It could be anything. Let's pick up wallpaper. It creates an identity. Let's pick up any kind of stone work, cladding work. एक identity देता है आपके room को, घर को. But what happens with trends is, trends are temporary. They come and go. It's not something which is timeless, something evergreen. But again, it's a personal choice. There are some clients who are very, मेरे को ट्रेंडी घर ही चाहिए, मेरे को जो अपना, इट्स ओके, आई एम हैप्पी टू चेंज आफ्टर 4-5 years. So that's why it's a very personal take. So you do you also believe कि जो फर्नीचर पीसेस होते हैं या आर्टिफैक्ट्स होते हैं, दे ऑल्सो रिप्रेजेंट इमोशंस व्हेन इट कम्स टू डिज़ाइनिंग पार्ट Of course, 100%. See, because जब हम फर्नीचर कर रहे हैं, we are playing a lot with the color palette. Right? It's all about colors, combination, color coordinating, the cushions, what we are putting there. जो सोफाज हैं, उनका जो फ्रेमवर्क है वो कौन से मटेरियल में है, वुड में है, मेटल में है. जो टेबल्स हम कर रहे हैं, अगेन देयर इज़ अ वाइड वैरायटी. वी कैन बी डूइंग इट इन marble, we can be doing it in inlay, and of course wood is always there. Like जब एक घर बनाने की बात आती है, if that particular प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग दो पार्ट्स पे बात करेंगे. वन इज़ कि लग्जरी, लैविश एंड एलिगेंट, एंड द अदर इज़ प्रैक्टिकल, ईजी टू मेंटेन एंड अप्रोचेबल. सो लोग चाहते हैं कि हम लग्जरी बनाएं, बट वो अगेन प्रैक्टिकल नहीं होता कई बार, और कई लोग ये वो बजट फ्रेंडली नहीं होता. सो इनको दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये एज अ प्रोफेशनल पर्सन लाइक यू, तो जब, क्योंकि हम लोग तो आपके पास ही आएंगे कि अगर हमको कोई चीज़ ऐसे डिज़ाइन करानी है, सो ये बैलेंस आउट कैसे करोगे फिर आप?
So that's where when we designers step in, right? You're right. People want luxury. At the same time, they want it to be easily, accessible. And at the same time, they want the costing should be good. So that's what that when, as I mentioned, कि that's the time when we step in. So हम उनको options दे देते हैं, right? Luxury look, of course, it's we create that luxury look, but उसमें भी segments होते हैं. Again, जब भी कोई अपना घर बना रहा होता है, when it comes to budgeting and costing, there is no limit. आप किसी भी हद तक जा सकते हो. अब फॉर एग्जाम्पल आपने फैब्रिक खरीदना है, 2,000 rupees a meter is also great, then 20,000 is also great. So there are certain things which are in the client's hands, which I tell them, we can give you a luxury look. It can be very cost effective and at the same time very practical also. But there are these few things that we have to keep in mind. I take you to a store and you say, oh, wow, this Versace is amazing or Roberto Cavalli is amazing. But then you have to pay for that brand. Got it? You have to pay for that. So उसी में भी cost difference बहुत आ जाता है, if I'm making a sofa, you need at least any kind of a sofa, a 2-seater or a 3-seater, you need at least 10 meters, right? अगर आप एक सोफे पे ही you're going to be spending upholstery for 2 lakhs and the sofa structure itself is maybe lesser than that, then of course, then it is your decision. So that's why I tell the client, we can create a premium look for you, something which gives you a wow feeling. But when it comes to material selection is what we have to be careful. And we are very lucky that we are in a day and age where हमें इतनी options हैं, which is from a mid-range to a high and, premium. So we get a lot of options, even when it comes to veneer, even when it comes to any upholstery. So that's for us how we create it and what kind of, final product we give them. एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एंड वेरी कॉमनली डिस्कस टॉपिक है, दैट इज़ कि फॉर एग्जांपल माय बजट इज़ 100 रुपीज़ फॉर अ इंटीरियर पार्ट, है ना. अब मेरे को खुद नहीं पता कि 100 रुपीज़ को मेरे को स्पेंड कैसे करना है. मतलब लाइक व्हेन हम लोग फ्रेंड्स में लाइक किसी के घर वगैरह अगर बनता होता है तो हम लोग बात कर रहे हैं, सो वहाँ पे जनरली एक ब्लैंक होता है कि मैं गया था एंड मेरे को ये पसंद आ गया, मैं ले आया. आई जस्ट वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू कि लाइक अगर मेरे पास में 100 रुपीज़ हैं एंड मेरे को एक डिसेंटली गुड होम को डिज़ाइन करना है, नॉट लग्जरी, वी आर नॉट टॉकिंग लग्जरी, तो वहाँ पे मेरा जो रेशियो है वो किस किस पे कितना कितना स्पेंड होना चाहिए. फॉर एग्जांपल लाइक व्हेन इट कम्स टू वॉशरूम्स, व्हेन इट कम्स टू लिविंग एरिया, व्हेन इट कम्स टू बेडरूम्स, व्हेन इट कम्स टू द किचन और अदर पार्ट ऑफ द हाउस, तो कितना रुपए में कितना कितना, या रेशियो इफ नॉट रुपीज़, रेशियो लाइक हाँ जस्ट नॉर्मल पार्ट की, जिससे लोगों को एक आइडिया लगे कि हमको यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. How you want to divide your budget? Yes, budgeting. So, when it comes to this, again, it is, client से ये हमें बहुत clarity लेनी पड़ती है. Again, there are many clients who say कि मेरे को तो जी मेरी हमेशा ख्वाहिश थी कि मैं पूरे घर में मार्बल लगाऊं. भाई अब आपकी ख्वाहिश थी तो खर्चा भी तो उतना करना पड़ेगा, राइट? इनफैक्ट आई वॉज टेलिंग वन ऑफ माई क्लाइंट, आप मार्बल वॉशरूम्स में फॉर एग्जाम्पल डोंट पुट मार्बल, दे ब्यूटिफुल टाइल्स इन द मार्केट, लेट्स पुट दैट. बट नो, उनको था कि नहीं मेरे को मार्बल ही लगाना है. मार्बल की अब कॉस्ट अलग हो जाती है, राइट? आपका purchase, your polishing, your labor, it's totally different. It's a totally different concept only. Tiles का different है. Tiles आपको pieces में मिल गई. You order X number of tiles, and there the labor will come and put it up, and then in Done. few Yeah. days it is done. So yes, so this is again one question which we first try to get an answer from our clients, is that which area is it that you want to have that comfort zone, or you feel that it should look expensive and you're happy to spend. Now there are many people who say, oh, I have a lot of guests coming, मेरे को drawing room अच्छा चाहिए. I have a very busy routine, I work all day, my wife is also working, our room is just to come and sleep. So we are okay with a basic looking room. But
It's very important that our guest, our recreational room, home theater, so everything, there is a cost which, it's added, आपको होम थिएटर चाहिए, आपका होम थिएटर का एक अलग कॉस्ट है, राइट? अब उसके नीचे जो हमने टीवी यूनिट बनाना है, अगेन वी हैव टू कीप इन माइंड all your equipments. We don't want your equipments to be visible. We have to make a unit which looks clean, which gives that nice finished look. So again उसकी एक डिज़ाइन एस्पेक्ट अलग हो जाता है. So when your question is that जब आपके पास 100 rupees है, how do you divide? So this is again, it is interlinked with the client's requirements. Someone says I love cooking, my kitchen has to be very good. मेरे को तो कुकिंग का शौक है. आजकल कितने लोग कुकिंग के प्रोफेशन में डल रहे हैं, राइट? दे से उनका पर्सनल यूज़ है. बड़े घरों में होता है कि इट्स नॉट पर्सनल यूज़, माई हेल्प इज़ गोइंग टू यूज़ इट, माई कुक इज़ गोइंग टू यूज़ इट, मैं तो एंटर भी नहीं करती हूँ. बट देर आर सो मेनी पीपल हु आर इन्वेस्टिंग एंड स्पेंडिंग अ ह्यूज अमाउंट इन देयर kitchen equipment, appliances, everything. So that's how then we help the client divide that, okay, if that is your requirement, let's do this. Guest rooms, I always say, let's keep it nice, basic and simple. If you're not now in a city like Bombay, बहुत से लोग हैं, इतने clients हैं कि जिनके कम guests आते हैं, इतने कोई guests आना जाना नहीं रहता है. So, but still, of course, there is a guest room in the house. So you make a nice, decent, simple guest room, which is good enough. Don't spend that much on it. Spend on your other areas. Like after this movie and after the opportunity that you got in Dhurandhar, so उसके बाद में actually and practically कोई एकदम ड्रास्टिक बिजनेस में एकदम आपको शिफ्ट देखने को मिला? Yes, actually there was a great boost that we got, a lot of inquiries on our social media platform, and inquiries, I would say, not only from India, from all over the world. So yes, बहुत एक कहते हैं ना कि एकदम इतनी inquiries आ रही हैं, people are asking, even from other countries we are getting calls that where is this house located, because obviously they have no idea where Chandigarh is, and how big is this house, who is the architect, how long did it take you, so many questions. Can we see the interiors of the house, which is of course a personal space, we cannot disclose it like that, because our clients are living there. But yes, I would say बहुत boost मिला, बहुत people are liking our work even more, more followers have come. So yes, blessed sense of happiness and joy. So आपको लगता है कि after this kind of success एक expectation level from the audience और client perspective change होता है खुद को लेके, और उसको फिर आप कैसे मैनेज करोगे इन कमिंग मंथ्स और ईयर्स? Yes, so उसको manage करना is of course, as I said before also in my conversation, team building, to have a very, very strong team. You got to invest in it, have good people, experienced people, professional, most importantly, who respect my time, their time, and the client's time. So I feel client dealing is very important. These days clients demand your time. They want कि every WhatsApp पे उनको रिप्लाई किया जाए, every decision making में yes या no या एक और ऑप्शन दी जाए. So yes, it is a big responsibility, like after this boom, that people are going to be expecting more. They'll be like कि अच्छा आपने इस लेवल का काम किया हुआ है, so we expect a certain kind of delivery from you, a certain kind of what do you say, finish from you, and most importantly team, because everyone wants professional dealings. Even we want from the client, and even the client wants from us, and it's fair enough. It's both ways. That's how you end up making a good client relationship. And in our work, I feel word of mouth is very important, very, very important. कहीं आप गलत हो गए, कहीं पे आपका कहीं mess up हो गया, one client bad mouthing you, I personally feel it's not a great thing. So that's why जो एक मैंने point आपको बोला था, client dealing is very important. You got to learn
to say sorry. You got to say, okay, हो गया मुझसे, no worries. It will be done. Give us 2 days. You can't have your ego, if you want to grow. So like after like we will be finishing off this podcast, so कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जब लोगों को और आपके बारे में पता लगेगा एंड द वर्क दैट यू हैव डन एंड ऑल, सो वहाँ पे एक टैग जो फेमस हो जाए, दैट धुरंधर का जो मूवी से रिलेटेड जो पूरा आपने वर्किंग करी है, गायत्री बेदी द धुरंधर लेडी ऑफ द इंटीरियर डिज़ाइनर्स in India. This could be I think so. because जितना ट्रेंड चल रहा है, जितना आई थिंक कि अमेजिंग आपने काम करा है, so you'll get a lot of as I said, it's a teamwork, and in this especially this project that we are talking about the particular project in Chandigarh and where the movie is shot, it's a lot of involvement also from the client side. मैंने आपको मेंशन किया that लाइफ में, सबकी लाइफ में एक पुश आता है, एक गॉड सेंट पर्सन आता है. So for me it was her. So I would really thank her and the team. Everyone has put in their hard work, and then only the outcome is good. So like आप whenever you anybody is approaching you for a particular project, so starting से लेके end तक आप कैसे execute करते हो, like what is the entire process? Most important thing is of course to organize listing, which is very important because हर stage पे जो आपका काम होता है एक अलग तरीके का होता है. When we start designing, for example, अभी हमारा लखनऊ project, we are nearly done with the designing everything. So we pick areas. We can't start designing the entire house at the same time. जो requirement है, जैसे flooring है, so इसकी proper listing होती है that okay, first we are going to finalize all the floorings of the house. Okay. Once the flooring is done, then we see flooring and ceiling we end up doing side by side. Then once we are clear, that's the first step. Okay, there is clarity. What we've done is flooring and ceiling. Then we go on the walls. Because again, with the bigger projects which are on a bigger scale, you get to create a lot. It's not only just one room and a dining room and a living room. There is a basement. Either that basement is being used for parking or your recreational time. There are different ways. Then there is a pool area. So most important from the beginning to the end is listing out timelines, because that's very important for us. अगर हम अपने लिए नहीं timelines बनाएंगे तो it'll be very difficult to finish any project line. So that's what I tell my team. Please, I do not want you to get confused with 3 to 4 things at the same time. Make a list that today, this week, we are going to be completing this. So that even they can use their mind peacefully, because it's designing. It's not any copy-paste work. You have to keep everything in mind. अगर आप एक जगह का कुछ डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो आपको और भी कितनी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि लाइटिंग है, सीलिंग कितनी है, सब कुछ. देयर आर सो मेनी थिंग्स. सो आई टेल देम पीसफुली करो, बट जो एक एरिया भी आप कर रहे हो 2 दिन की जगह 3 दिन ले लो, बट time yourself. That's very important. So timelines, organization, that's the most important. And then we check जो हमने अब ये timelines बनाई है, organization, listing करी है, what we have achieved and what we have not achieved. And then we work on that also, because there are times, there are things that हम उस timeline में नहीं achieve कर सकते. कुछ delay हो जाता है, कुछ change हमारी तरफ से हो जाता है, client की तरफ से हो जाता है. So yes, so there is a lot which goes in when it comes to execution. This is just, I'm talking about the interior part. Furniture का एक अलग ही एजेंडा चलता है कि उसकी साइजेस कैसे हैं, कौन सी वॉल पे आ रहा है, कितनी हाइट पे आ रहा है. अगर ये लाउंजी काउच है तो उसको इतना सॉफ्ट बनाना है, ड्राइंग रूम का काउच है तो इतना फर्म बनाना है, सेंटर टेबल इस हाइट पे आ रहा है, साइड टेबल इस हाइट पे आ रहा है. सो दैट्स अ टोटली डिफरेंट वर्क ओनली. सो व्हाट इज़ योर टेक जब आप अपने पूरे हेक्टिक शेड्यूल से वर्किंग से एकदम
ऑफ हो जाते हो तो व्हाट डू यू डू? I want to sleep. I want to eat good food and sleep. You know, So, that's the first thing, because I feel sleep is very important. You know, कभी हम अपने आप को overwork कर लेते हैं travel के साथ, calls, so many things, you know, and which is not only in my profession, हर profession का एक अलग requirement होता है, demand होता है अपने काम में, but I feel that a good sleep can really make you work well the next day. You know, of course, you don't get time for anything else. I would love to watch some amazing shows on Netflix, but nahi time milta hai. You know, I like to spend time with the family, because anyways, end of the day, it's little time in hand. You know, you spend time with the family, you have your meals together, and yeah, I like to catch up on my sleep, most importantly. So the next part of the podcast will be the rapid fire. So lighting or furniture, what matters you the most? Intentional lighting. Intentional lighting. Okay. Yes. Intentional lighting. Vintage या modern? Vintage. Vintage. Wood या metal? Wood. Wood. चंडीगढ़ की vibe या मुंबई का glamour? Chandigarh. That's close to my heart. That city. So to all the people of Chandigarh, this was especially for you. एक ऐसी चीज़ जो किसी भी रूम को एक्सपेंसिव बना सकती है? I would say a oversized art piece, right? Any oversized art piece. Also, shades, what kind of color palette we pick. You know, it could be even on a wall. You know, अगर हमने किसी wall पे एक vibrant color किया हुआ हो, that becomes a statement, eye-catching piece, you know, eye-catching area. So I think when you play with different polish shades or paint shades, that also really enhances the place, and it can really look, you know, it can attract a person when they walk into a room. क्या हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल होता है, एक लॉयर या एक बॉलीवुड स्टार? That's a tough one, but yes, I know I have to pick one. I would say a lawyer, because Lawyer. at least कुछ He's negotiate manipulative. कर सकते हैं और कहीं settlement पे पहुंच सकते हैं. So yeah, lawyer. बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है, लॉयर्स आर वेरी स्मार्ट इनफ टू टेक अ साइड ट्रैक. Very. I know वो that. पता भी नहीं लगता. पता नहीं लगता, बट वही तो मैं कह रही हूँ ना, कहीं सेटलमेंट तो हो जाती है ना, एक कहीं you end up negotiating and you reach a conclusion. So one mistake that beginners are generally making, I think client dealing. client dealing. Yes, over promising and not delivering. Okay. You have to be very, very careful. You have to be very clear and honest with your client in the beginning only, that this is the time we are going to take. This is the cost which is going to be included in your project, because sometimes it happens. It's a very, very common thing. You know, the client will say, oh, you said that it's going to cost this much, and now the budget has crossed. So it is very, very important to be clear, have full clarity in written, approved, signed, that this is what's going to take, this is the finishes you're getting, this is the outcome of the project or the product. So yeah, I think there has to be clarity. That's what I would tell everyone, and that's what I have learned through my mistakes also, because it's not over-promise भी जब हम करते हैं, you realize with time that everything takes time. You know, you cannot, and this is all designing. You have to be creative. You cannot just do it in 2 days, 3 days and say, de diya. So best is to be clear, you know, then it's the client's decision whether they want to take you, not take you. And client also respects that, okay, she or he, they've been very clear and thank you so much. So वो respect करते हैं आजकल. They don't want any surprises, nor do we want any surprises. एक again one common thing that comes up every time of discussion, like कि एक तो होता है बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच कि आपने क्लाइंट डीलिंग, जैसे आपने एम्फेसिस आप बहुत ज़्यादा करते हो. सो यंगस्टर्स के अंदर में उनको बहुत जल्दी बहुत चीज़ें करनी है. उस रीज़न से वो
बहुत मिस्टेक्स कर लेते हैं अपनी लाइफ में, जो शायद एक्सपीरियंस प्रोफेशनल अगर होगा कोई तो वो चीज़ का ध्यान रखता है वो, लाइक आपने क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड क्लाइंट हैंडलिंग के बारे में बात करी, तो वहाँ पे इन जनरल क्या होता है, लाइक अगर मेरे को सपोज कोई प्रोजेक्ट लेना है तो मैंने उनके हिसाब से यस 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 करा और डील डन करी मैं वही तो and बोल move रहा, on. तो फिर आप ओवर प्रॉमिस कर रहे हो, Yeah. right? You cannot do that, and that's not fair. I feel you have to be real, you have to be honest, because whoever is coming to you is coming with a lot of expectations, and they're making their dream home. देखो, घर एक ही बारी बनता है, बहुत कम लोग हैं जो आज भी बनाया और फिर 5 साल बाद फिर से भी बनाया, you know, it's going to be there for their generations to come. So you have to respect that. कोई अपना, वो भी अपना टाइम लगा रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कॉस्ट. You know, there is a huge cost factor which is involved in making a home these days. Whether you make a practical home, whether you make a home which is luxurious looking, or which is just, any kind of home. So you have to be very clear with the client. You cannot play with their emotions or mess with them like that. कि या सब हो जाएगा सर, कोई बात नहीं, मैं 4 महीने में ये कर दूंगा. 4 महीने में अगर कुछ होता है तो आप प्रॉमिस करो 4 months. बट अगर नहीं कुछ होता तो आप उनको बोलो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट टाइम लाइन. समटाइम्स क्लाइंट्स से कि नहीं मेरे को तो जल्दी चाहिए, आई डोंट नो, आई हैव टू शिफ्ट इन दिस हाउस इन द नेक्स्ट. सो यू हैव टू बी रियलिस्टिक. कितना काम है, नहीं हो पाएगा, मानसून्स आ रही हैं या जो भी है. In a country like India, so many festivals have come. They are there, in the sense there are so many holidays. You can't avoid that. And this is all labor-related work. Designing is one thing. We can work overtime. My team can work overtime. But the labor will not work overtime. They have their set thing. उनको जब जाना है, उनकी जो holidays हैं या festivities हैं, they want to be with their family. So I make even these things clear to the client. Please do not overpromise. They might not like it, or they might appreciate. It can be both ways. They might say no, कोई बात नहीं, we'll go to someone else and get our work done. Absolutely fine. Go to someone else. But what you can't do, please don't promise. That is the worst thing. It's very, very short-lived. So guys, this is one of the most in-depth conversations that we had in a podcast, and especially when it comes to professionalism and the way you need to handle your respective clients. You need to give respect, you need to be practical, you need to be logically right, correct, and actually you need to say what you need to say, and he needs to understand that part. Because जैसा मैम ने अभी हम सबको पॉडकास्ट में बताया, दैट अगर एक होता है हार्ड वर्किंग, एक होता है स्मार्ट वर्किंग, बट एक होता है प्रैक्टिकल वर्किंग भी. सो यू नीड टू बी प्रैक्टिकल. अगर आपको उस लेवल पे, उस जगह पहुंचना है, तो बहुत सारी सैक्रिफाइसेस हैं जो यू नीड टू पुट इन. यू नीड टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर दैट ऑल्सो. और एक सही प्रोफेशनल के साथ में अगर आप अपना घर डिज़ाइन करते हो, सो आपको बहुत सारी अच्छाइयाँ मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, एंड एक्सपीरियंस जो है वो एक बहुत अमेजिंग रहता है. सो आई थिंक कि जितना कॉन्वर्सेशन आपके साथ हुआ है मैम, वी आर रियली ऑनर्ड एंड प्लीज्ड कि एंड आई थिंक जितने लोग को ये पॉडकास्ट सुनने को मिलेगा जब ये पॉडकास्ट रिलीज़ होगा, सो एक चीज़ डेफिनेट है इस पॉडकास्ट का जो क्रक्स है, दैट इज़ कि अगर इस पॉडकास्ट को किसी ने ढंग से सुन लिया, समझ लिया, क्लाइंट डीलिंग तो डेफिनेटली बेटर होने वाली है. I'm telling you, it's through my experiences. That's why I think I repeated also a few times. It's very important. Yes, it is actually important. See, we are human beings. Mistakes होती हैं, सबसे होती हैं. But how to solve that? Problem solving is very important. You can't be like, you can't get into a blame game. आपने ये बोला, आपके वर्कर ने बोला, साइट मैनेजर ने, कॉन्ट्रैक्टर ने बोला, और there are so many things which can go to and fro. There's no point. I always say, अच्छा हो गया, कोई बात नहीं,
let's solve. There is a possibility to solve everything. So that the client will always notice. You know, you have to see the big picture, which is very important. Because there are very few people जो अपनी गलती मानते हैं easily. कभी गलती नहीं भी होती है, फिर भी you have to say a yes, you know, because there is no point getting into argument or any kind of unpleasant dialogue. You know, you don't want to do that. So you say, and that's what client, agar there are all kind of clients. There might be a hyper client, calm client, understanding client. So I always say कि जो client होते हैं ना, पहले उनको समझो. It's like literally getting into a relationship Yes, with them. exactly. Right? Because making a house, it's a journey. It's not एक महीने का काम या 2 महीने का काम and then you're not seeing them at all. You're starting from somewhere and it's a long process. So you have to understand him, her, all the family members and then deal with them accordingly. लाइक मूवी वाली वर्किंग से पहले किस तरीके की लाइफ और किस तरीके की क्लाइंट डीलिंग आप कर रहे थे, और अब आफ्टर द मूवी, है ना, व्हाट एक्चुअली चेंज्ड? Touchwood, you know, clients, I've always got good clients, you know. I would, हाँ, difficult clients होते हैं जो थोड़े demanding होते हैं, but no one is bad, right? It's like how you manage them. Again, it's like आप कैसे manage करते हो. Demand होते हैं, demanding बहुत होते हैं कई clients. मेरा कोई, firstly तो मेरा कोई timing नहीं है काम करने का. I am not the kinds के जी अभी Friday हो गया है and Saturday, Sunday I'm not available. There are some very sweet clients who will message me and they say, okay, I'm so sorry I'm messaging you on a weekend. You can reply to me on Monday. And my reply to them is, no problem. I'm replying to you right now. I'm working all 7 days. ना मेरा कोई timing है कि 6 बजे के बाद, you know, I'm saying it openly and I'm sure many clients of mine will hear this and that's why I'm saying it, that I don't reply back to their messages or call them back. I don't know whether I am like that. It's not that I force myself to do that. I just feel uneasy and uncomfortable if I don't get back to my client immediately for anything. In fact, my family members do tell me, oh, there has to be some, you know, अपने लिए भी time निकालो. You can't be on the phone all the time. But I don't know, मुझसे नहीं होता है. You know, I feel you have to again respect the client because कईयों का profession ऐसे होता है जो सिर्फ weekend पे free हैं. Then what do you do? Weekend पे मैं नहीं उनकी call लूँगी, weekend पे वो नहीं free. Outcome is going to be zero. So, you know, there are like lawyers or doctors or so many other professions जो उनको weekend पे time मिलता है. So मैं तो कितनी बारी, so many times, 10 o'clock at night, 11 o'clock at night, I've gone on Zoom calls because I want the work to be done. Decision taking, final, and move ahead with your work. But if this to and fro of calling, not picking up the phone, not being on the site, then, you know, then there's no fun. You know, there has to be that excitement. You have to be passionate about your work and say, okay, yes, let's finish this. I always tell my team, get after the client. The client should not get after us. That is something which annoys me. I do not want that kind of system in my team at all. That client is asking for follow-ups. आप अपने आप दो follow-ups every morning. Let's update the client that today this we are doing. By the end of the day, this will finish. So there are no timings for me. I tell my teammates also, I said, I will not push you to work on a Sunday. But of course, Saturday is working for sure. But luckily, again, I am blessed with a strong team. कभी भी मेरे को ना नहीं बोलती है, you know. 10 बजे भी करना हो, 11 बजे, ma'am, yes, it's okay, we will do a Zoom call. You know, कोई नहीं available, तो of course, they let you know in advance. So you have to be flexible, you know. That is if you want to grow. If you start looking at days and time when you're working, your success is limited, I feel. That's what I have learnt. You know, ये मेरी अपनी ही learning है. जब आप passionately बिना वक्त के या कोई दिन देख के काम कर रहे हो, then you are just so involved in your work. जो आपका सवाल था कि clients के साथ कुछ change हुआ है. So I've always been blessed with good clients. You know,
हर तरह के होते हैं, सबकी नेचर अलग होती है. अब अपने घर में भी सब तरह के लोग होते लोग हैं, होते हैं. सबकी नेचर अलग होती है. यू हैव टू डील विद देम. सो या स्टूडेंट्स जितने इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड आर्किटेक्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आपका क्या सजेशन रहेगा, या क्या एक ऐसी चीज़ रहेगी जो आप बताना चाहोगे दैट कैन इम्पैक्ट देयर एंड चेंज देयर फ्यूचर? I would say do practical learning also side by side. Internships are very important because जो आप practically सीखते हो, it's a totally different, different learning. You know, of course, whichever, whenever you want to start some internships, you must start doing that because that is where the real learning lies. Work for a month, work, different. It could be commercial projects, residential projects. We have such good, talented people around us all over. आप किसी भी शहर में चले जाओ, हर जगह ये टैलेंट भरा हुआ है. And it's amazing how people are creating such wonderful homes. So at last, I would also like to know more about Gayatri Bedi Designs, like what all you guys are doing, and the presence in which sectors, more residential, commercial, or projects like that. So at the moment, we are doing only residential projects, and we have our projects going on pan India. We have a project going on in Lucknow, Hyderabad, Amritsar, Chandigarh, multiple projects, flats in Mumbai. So yes, we are trying to have a good coordination everywhere, and yeah, these are the places that we are working on, and all are residential at the Residential, moment. basically. Yeah, all are residential. Right now, nothing commercial that has come our way. It has in the past, but currently we are working on this. अब आपकी एक जर्नी की तरफ आते हैं. उसमें एक लॉयर जो कोर्ट रूम्स के अंदर में दिमाग लगाता है, अपना डिस्कशंस करता है, वो कैसे एक घर में वॉल्स और वुड्स के बीच में एक इश्क कर बैठा, और प्लस ये जो एक ट्रांजैक्शन था जिसके अंदर में लीगल और क्रिएटिव के बीच में, वो उसको कैसे देखते हैं आप? दिमाग तो दोनों में ही बहुत लगाना पड़ता है बिकॉज यू कांट मिस आउट एनीथिंग, वेदर इट्स लॉ, वेदर इट्स डिज़ाइनिंग. योर अटेंशन टू डिटेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लॉयर कोई केस लड़ रहा है, यू कांट मिस एनी पॉइंट. Me as an interior designer, I can't miss any point. It could be either in interior or furniture production, anything. So you have to get into the depth of it in both professions. So that's what I have learned. My journey, of course, started as a lawyer, and as your question is to me, that how the transformation was, and also a lot of learning happened from law. Law taught me how to be disciplined, and of course designing में मेरे को freedom मिली to be creative. Again, sky is the limit. But जो वो discipline था, which was very important. As I finished my college, I started working with a senior advocate who was very very disciplined and very particular. So जो वो मेरा first experience और जो first job थी, that taught me a lot. It was like, जैसे मैंने मेंशन किया, आई एम वर्किंग ऑल 7 days. सो विद हिम ऑल्सो देयर वर नो संडेज. ओके. हमें कोई संडेज को छुट्टी नहीं मिलती थी. ही यूज्ड टू बी लाइक, व्हाई डू यू हैव टू स्लीप, फॉर व्हाट, दिस इज द टाइम टू वर्क. सो एक वो हैबिट पड़ गई कि ओके, दिस इज हाउ. एंड जब वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है व्हेन यू आर वर्किंग विद समवन, यू फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर आउट ऑफ कॉलेज एंड यू आर अंडर समवन, वो आपके एक मेंटोर हैं, you learn a lot from that person, and in a profession like law you have to be disciplined. सब कुछ टाइम पर होना चाहिए, सब में एक डिटेलिंग देखनी पड़ती है. there is nothing that, oh my god, I left this. You're done. If you've left that, your case is gone. And same thing in designing. You can't leave something. If you've left something, your designing is incomplete. So the journey has been very interesting. I've learned a lot from that profession, which I am using it here now.
सो लाइक आफ्टर द ग्रैंड सक्सेस ऑफ धुरंधर, जहाँ पे आपने एक अमेजिंग वर्क शो करा है अपना, तो इज़ देयर एनी मोर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जहाँ पे हम आपका काम और देखने वाले ऑन स्क्रीन? Yes, absolutely. There is again another project which is in Chandigarh itself. Interestingly कि ये दोनों जो मेरे projects हैं, एक के बाद एक they were selected by for the movie. So this other project which is being selected is Imtiaz Ali ji's movie, ओके. where Diljit Dosanjh is the actor, and the movie was shot for good 1 week in that house. A lot of spaces were covered, a lot of the outside area, inside area. So एक हफ्ते का उन्होंने shooting किया था. Again, a very great client of mine. He is a lawyer too. He's a lawyer too. And the team had come, they had done a lot of research months before they started the shooting. They saw all the detailing. It's amazing how Imtiaz Ali ji and his entire team, they checked each and every scene कि कहाँ पे कौन सा scene कैसे shoot करना चाहिए. So उन्होंने अपना पूरा homework किया था. Of course, before finalizing, everyone इनके site managers होते हैं, बहुत घर देखे. But again, this house was selected because it went well with his script. कितनी बड़ी प्रॉपर्टी होगी टेंटेटिव एरिया? So this is about 15,000 square feet. 15,000 square Yeah. feet. So again, it's a bungalow. It is a bungalow. Absolutely, it's a bungalow. It's a very big bungalow. It has a pool. It has a beautiful terrace. It has all the amenities. It has a gym. It has a recreational area. सब कुछ है. It's very lavish looking. Thank you so much, guys, for watching this entire धुरंधर episode of the Housing Card Show. और ऐसे ही और एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए. अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए. थैंक यू सो वेरी मच.